morning. The difference between ordinary and extraordinary is that little extra. Just write down your sentence and find the difference between ordinary and extraordinary. Write both the words together simultaneously, side by side. Ordinary and extraordinary. Both the words have the basic material, ordinary. But in extraordinary, the word extra is there. But when you see extra in different perspective, you find something not very unusual. You don't find very alarming. You don't find very stupendous. You don't find something very great. When you say extra, what extra does it make? Abhi dekho, you must have seen some of the football matches. There are 11 players playing in the field. And the 12th man is sitting outside. Who are those players? Extra. But extra means nahi khel raha. The main players are those 11 players in the ground. But if same extra is prefixed before ordinary, that makes extraordinary. How many of you have seen extraordinary children in your school, in your classroom, in your society? You must have seen few of them. Their walking gait, the way they amble, the way they interact with others is something extraordinary. We say extraordinary, hatke. So, my endeavor is that you should all be extraordinary. At least your efforts should be one, moving towards extraordinary. How can you become like that? There are certain processes, there are certain ways and means through which you can walk up the ladder and achieve the target. And precisely, we are all in that pursuit. I have used the word pursuit. P-U-R-S-U-I-T. Pursuit. मतलब उसी की तरह चाहत. Desirous of finding something, I am in a pursuit of larger result. Pursuit मतलब इच्छा, मेरी चाहत. देखो बच्चों, मेरा purpose है कि while I speak and the words which I use, those words should become yours. And once you start using those words, you are no more ordinary child. You are in a process of becoming extraordinary. And that is the beauty of we elders to guide our children. Like yesterday, I would again remind most of my children that during this lockdown period, it is just a brief introduction. What I intend to say, that most of the parents, they are calling up कि सर कैसे पढ़ाई होगी. So it's always better that you e-Pathshala, you just go to the App Store and download e-Pathshala. All the chapters from class 1 to 12, all the subject materials are there, chapter wise. Download those and simply read. Read those chapters, delineate those words whose meanings are not clear to you, and try to find out their meaning along with the synonyms and antonyms. 99% work is done, including mathematics. Rest, when the school opens, you can do the sped work in the school along with your teachers, which would be finding very handy for you to help you out in normal classes as well as tutorial classes. Now, you must be in a position to derive the difference I just gave you, ordinary and extraordinary. So, my dear children, it is a small bit of effort, bits and pieces, छोटे छोटे 10 word, 15 word a day, that makes huge difference over a period of time. That can make you from an ordinary boy to extraordinary boy, ordinary girl to extraordinary girl. क्या है भाई?
छोटे एफर्ट्स, जो वर्ड्स हमें मिले उसके मीनिंग देखनी है, उसके सिनोनिम्स पे जानी है, एंटोनिम्स पे जानी है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट इट्स यूजेस बाय कीपिंग इन रेफरेंस 4 or 5 things. Whether I can use this word in context with the environment, whether I can use this word in context with my parents, with my friends, with my peer groups who are in the society, locality, nearby. You will never forget, because these are the areas which really you come in interaction with every day. Just imagine, you get up, whom do you find in front of you? Your parents. After you have done your basic things, you go to your school. Whom do you meet? Your friends. After the school hours, whom do you interact? While coming from school to your home, the society men. Market में जाते होगे. And you must be interacting with your villagers, with your neighbors. And while going from school to your home or from home to the school, you are coming in touch with the environment. You must be seeing the flowers, the plants, the trees, the walking cow, buffalo, the pigs, the floras and the fauna, the chirping birds. These are the ones you come in contact with day-to-day life. So, whatever words that you are trying to remember, their meaning and the synonyms, antonyms, you will say, sir, how can I make sentences? Whom to make the basic reference point? After whose reference we can start using those words in context of. Now, let us say today I am using a word fructify. 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 Fructify मतलब to lead to or to produce into useful product or useful result. आप जैसे देखो, अभी पतझड़ के बाद आप देखते होंगे कि पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते सब बूढ़े हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं पतझड़ का मौसम. उसके बाद नई नई कोपलें निकलती हैं, नए नए वृक्ष के ऊपर देखो हरे हरे पत्ते, बड़े बड़े मासूम से पत्ते, बड़े प्यारे पत्ते निकलते हैं. उसको बोलता है क्या? पल्लवित होना. पल्लवित, दैट इज कॉल्ड द न्यू लीव्स आर कमिंग, ब्यूटिफुल लीव्स आर कमिंग. तो जब भी आप you are in a process of learning something, once you labor act into certain effort that really fructifies into something. And it is always said, hard work always fructifies into success. More you labor in positive directions with the right kind of suggestions, and your hard work really fructifies. फ्रक्टिफाइज वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे उसके बाद कुछ रिजल्ट्स आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. बुरे रिजल्ट भी आएंगे. सम पीपल वेंट आउटसाइड, दे वर टोटली रेकलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल. दे वेंट टू अमेरिका, दे वेंट टू फ्रांस, दे वेंट टू इटली, एंड दे केम डाउन टू माई कंट्री, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे वर इन्फेक्टेड विथ कोरोना, एंड इट led to so many, people got infected with coronavirus. So that is also a fructification in wrong direction. They are coming in contact with the people led to spread a virus. But by and large, fructification the word is used in positive sense. Most of my children, they are laboring hard. I can tell them that if you labor hard, my dear children, tomorrow results shall fructify into success. So these are the words and these are the uses. Now, I would be using this word in context I gave you. You have to have three or four situations in which you have to use the word. How can I use this word with my father?
How can I use this word with my mother, with my uncle, with my aunt, with my friend? If you have your trust established with your friend, that shall mature and fructify into a better relationship tomorrow. So here the word fructify and its uses would be in this way. आपके अच्छे ट्रस्ट को लेके एक अच्छे रिलेशंस की शुरुआत होती है. So your trust and good faith shall fructify into a better friendship tomorrow. My dear child, again, remember, you said, sir, how can I use this word with my father? Your relentless effort and good faith which you have generated in front of your father, this faith will fructify into lots of love and affection in the eyes of your father. So the word fructify, you must have understood the meaning. Again, by merely listening, you are not going to understand the meaning. You have to relentlessly write the word many times. Write down its meaning, write down the sentences and find out its synonyms. For instance, I'll just give you a few words and in form of synonyms. Like the first word is better. Annual result came and my son has better result from the last year. So I can say that better. What is that better? That led to something. Last year you did some performance. It was supposed 85%. This year you got 87%. So must be that you must have put in some hard labor. So your hard labor must have fructified into better result. So better is also a synonym. My relation with my friends is much better and it is getting better by day. So better is also a synonym. Improve. It is also in the process of fructification. Your relation is improving day by day. Now, I am using a very, very positive word. Meliorate. 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 M-E-L-I-O-R-A-T-E. And there is a similar word. Ameliorate. A-M-E-L-I-O-R-A-T-E. इसका भी मतलब वही होता है. Lead to. Lead into production of something good. अब जैसे कहते हैं ना, I shall ameliorate you from the dampened spirit. Some friend of yours was sick for a while and he was on a delirium for quite some time. And you suddenly gave him some positive words, hence you kept him convincing him, no, don't worry, be happy. So, he was in a dampened spirit. Dampened spirit मतलब बहुत ही मुरझा हुआ, बहुत ही तनाव में. But your counseling gave him the opportunity to ameliorate him from the dampened spirit. So that dampening spirit मतलब एकदम थका हुआ, निराश. That was a dampening spirit. But you ameliorated him from the dampened spirit. Ameliorate मतलब उठा के बाहर निकालना. So ameliorate and meliorate. These are the words which are the synonyms of fructify. If you labor hard, you shall be ameliorated from the stigma of ordinary boy to extraordinary boy. Just see the magic from the words. How nice it looks. Fructify, meliorate, ameliorate, stigma. What is a stigma? एक स्टिग्मा मतलब दाग. अब देखिए कोई बच्चा जो कमज़ोर होता है, नॉर्मली ऐसा स्कूल में होना नहीं चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए. कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, कोई कारण बस कभी बीमार रह गया हो, किसी कारण से वो पिछड़ गया हो. कैसा बच्चा है? वो बहुत कमज़ोर बच्चा है. कमज़ोर सुनते सुनते बेचारा और कमज़ोर हो जाता है. So as a guardian, as a peer group, as our parents, we have to lift him up. We have to ameliorate him from the dampened spirit.
we have to know into the reasons. Why he is poor? Why he is not giving attention? Why he is so sick? How can I lift him up from the stage where he is into the stage where we contemplate him to be in? What is contemplate? सोचने की शक्ति. Contemplate. I am contemplating to travel to Gaya tomorrow. Contemplating. CONTEMPLATING. Contemplate. जैसे देखो, मैं जो अभी word use कर रहा हूँ, different kind of words. I'm just randomly picking the words. Randomly picking those words. दिस इज जस्ट एन आइडिया. एक कुछ इसी प्रकार से है जैसे हमारी भारत सरकार कर रही है ना कि जहां भी कोरोना वायरस का पेशेंट मिले उस एरिया को हॉट स्पॉट बना दो, सील कर दो. जस्ट हॉट स्पॉट मतलब वहां से मरीज मिला, जस्ट आइडेंटिफाई दैट एरिया एंड मेक दैट डिक्लेयर दैट स्पॉट एज हॉट स्पॉट. यू फाइंड अ वर्ड एंड ट्राई टू लॉक इट डाउन. ओह, दिस वर्ड I'll try to find noun of it, if possible, adjective and verb. I will find meaning of this word and similar, identical and synonyms of it, and thereafter antonyms of it. Complete process is done. ये आपका meaning aspect complete हो गया. अब आपने क्या करना है? You have to construct sentences by keeping different situations. How can I use this word with my father? Can I use this word in the society? Can I ever use this word in my peer group, with my friends, with my aunt in the society? Can I use this word with some of the elders in the society? So there would be certain facets, different areas which are open to you where you can really experiment these words. And then see the music. The word power shall be enormous in you, and you shall have physics में एक word है latent heat. वो latent heat क्या होती है? छुपी हुई गर्मी. आपके अंदर, हर बच्चे के अंदर there is a latent power to do anything. बस एक बार सोच लो. जैसे विवेकानंद की एक saying है ना कि आप एक चीज सोच लो, उसके ऊपर एकाग्रचित हो जाओ. आई हैव टू डू दैट. उसी में खाओ, उसी में पियो, उसी में सो, उसी में सपना देखो, एंड फाइनली दैट थिंग बिकम्स योर्स. इट इज ओनली द थिंकिंग पावर दैट रियली मोटिवेट्स यू. जिस दिन आप सोच लोगे कि आप कमजोर हो, आपसे ज्यादा कोई कमजोर हो नहीं सकता. जिस दिन आप सोच लोगे कि आपसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, आपसे ज्यादा अच्छा कोई कीन लर्नर नहीं है, आप देख लेना द डिफरेंस कम्स. एंड डिफरेंस कम्स इन मैनीफोल्ड क्वांटम. Thereby, power of thinking and power of making yourself lies within you. Now let us recapitulate. I have used the word fructify. In this sense, I have also used the word more, better, improve, meliorate. MELIORATE. और एक वर्ड और है ameliorate. AMELIORATE. ameliorate मतलब lead to. जैसे मैंने यूज किया, I said remove you. I shall ameliorate you from the dampened spirit. Babuji, Papa, my dear father, why are you so unhappy? I shall ameliorate you from the dampened spirit. So that's the use. If you go to the school, your teacher is very unhappy, you can ask her, you can talk to her, you can talk to him. And later on in the evening, he calls you up. बोलता है, no, Ravi, you emulated me from the dampened spirit. I was sickening. I was getting sully. I was getting nervous. But you gave me confidence. So, these are the different areas where you can use this fructify.
इसका सिंपल यूज ये है कि योर हार्ड वर्क shall fructify into success. So try to use this word quite often. If you can use normal words which you are using, try to replace your normal words by those words which you have learned recently. Over a period of time, while practicing, learning and reading newspapers, speaking with anyone, you will be developing mastery over the words. And those words shall become yours. That's the beauty, and that's the area how we can understand the meaning. And if you have sufficient number of word meaning at your disposal, it would be very nice for you to speak fluently. You know what is the difference between a bad speaker and a fluent speaker? The difference is that extra. I gave you the difference between ordinary and extraordinary is that little extra. So what is that little extra? If you have little extra word power, you are extraordinary speaker. You are an extraordinary man. You are an extraordinary student. You are an extraordinary boy or a girl. So that's the beauty. You have to really be in that category of extraordinary. And this is possible. Just imagine, what would you like to be called? Your father, somebody say, he is a normal boy or a girl. But somebody say, no, he is not normal, he is an extraordinary boy or a girl. पिताजी की मतलब जो 56 इंच का छाती होता है ना, वैसा हो जाता है. So, I believe and I presume that you must have understood the meaning of the word. Now come back to antonyms. इसका उल्टा वर्सन. His standard has worsened over a period of time. Why? पढ़ाई नहीं करता होगा. WORSEN, worsen. His position has worsened over a period of time. Worse, comparative degree में worse हो गया. Present, past, participle होता है ना, तो present में हो गया good, better, best. सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा? वर्सन, खत्म, कुछ नहीं. इंफीरियर, फ्रक्टिफाई, एक जगह हुआ है, यू लेवर हार्ड, यू फ्रक्टिफाइड इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी. इफ यू डोंट लेवर हार्ड, योर स्टैंडर्ड केप्ट ऑन गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स टू इंफीरियर, इनएडवाइजेबल. कैसे बच्चा है ना, उसकी कॉपी मत लो, उससे कॉपी मत करो. ना उसकी राइटिंग ठीक है, ना उसकी स्पीच अंडरस्टैंडिंग ठीक है. सो इट इज इनएडवाइजेबल टू कॉपी फ्रॉम दैट कॉपी. सो दिस इज नॉट proper. It is antonyms of fructify. Bad. Bad is a very simple word. Fructify मतलब अच्छा हुआ, अब bad क्या हुआ? बुरा हुआ. तो I gave you the word fructify. इसके synonyms हो गए, इसके antonyms हो गए. The next word which I took up today is generous. 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 It is normally used in a positive sense. यार वो आदमी बहुत जेनरस है, बहुत ही काइंड हार्टेड है, उसके पास जो गया वो खाली हाथ कभी लौटा ही नहीं. ही इज सो जेनरस. राजा कर्ण वॉज वेरी जेनरस, दानी थे. कहता ना कि कहाँ राजा भोज, कहाँ छछुआ तेली. राजा भोज क्या थे? बहुत बड़े राजा थे. जो भी उनके पास गया कुछ ना कुछ उनको मिला. उसको और इस तरह की जो टेंडेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जेनरोसिटी. आप जब आप लिखते हो किसी मम्मी को या पापा को, अपने बाबूजी को परसुएट करते हो कि प्लीज 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 कुछ पैसे दे दो ना. ओ ममा, ममा इज सो जेनरस, यू आर सो काइंड, यू आर सो नाइस. बटरिंग करते हो ना, तो वहां पे क्या यूज होता है? जेनरस. जेनरस से क्या वर्ड हो जाएगा? जेनरोसिटी. इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? जेनरोसिटी. Showing or readiness to give more of something, especially money. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उदार. एक बंदा होता है बहुत मक्खी चूस, कंजूस, but no, he is very generous.
कभी कभी क्लास टीचर के पास जाते होगे, नो 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 माई क्लास टीचर वेरी जनरस, गो विद एन एप्लीकेशन शी ग्रांट्स द लीव। दूसरा बोलता है जाना ही मत यार, बहुत खड़ूस है, देता ही नहीं है छुट्टी, जाओगे फाड़ के फेंक देगा। तो जो लिबरल सेंस में होता है उसको बोलते हैं जेनरस। जेनरस, जेनरस से वर्ड होती है। और उदारता, उदार को बोलते हैं जेनरस, एंड जो उदारता दिखाए उसको बोलते हैं जेनरोसिटी। GENEROSITY, जेनरोसिटी। आई वुड बी हाईली अप्रिशिएटिव ऑफ योर जेनरोसिटी, उदारता। इसके सिनोनिम्स देखो क्या है। बिग हार्टेड, आपका दिल बहुत बड़ा है सर, बिग हार्टेड, बड़े दिल वाले हो। बाउंटियस, BOUNTEOUS, बाउंटियस, बाउंटी मतलब बहुतायत में, उसी से बना है बाउंटियस। अनसेल्फिश, एक होता है ना कि बहुत सारे लोग अनसेल्फिश होते हैं, ना 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 ना, अपने पास कितना भी हो किसी को नहीं देंगे, कितना भी। कुछ लोगों को देखो करोड़पति होगा लेकिन सामने एक कोई भिखारी होगा, भूखा होगा, दरवाजा, शीशे का दरवाजा बंद कर लेगा। गाड़ी पे होगा, बोलता है ये गंदे लोग हैं, इसको भीख मत दो, 5 पैसा मत दो, गाड़ी में घुस जाएंगे, स्क्रैच लगा देंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। सम पीपल आर वेरी जनरस, अपना खाने को भी नहीं होगा दूसरे को दे देंगे, क्या होगा यार, दे दो। उनकी तृप्ति दूसरों को खुश होते हुए देखने से हो जाती है। सच पीपल आर कॉल्ड जेनरस। अनसेल्फिश, अनस्टिंटेड, जो वर्ड होता है स्टिंट, स्टिंट का मतलब होता है क्या, नॉन जेनरस, अनस्टिंटेड। स्टिंट क्या होता है, दाग, दागनुमा, स्टिंट। अनस्टिंटेड, UNSTINTED, अनस्टिंटेड। ओपन हैंडेड, उदार जो होगा, ओपन हैंडेड तो हो गई। टू जेनरस, अनस्पेयरिंग, एक होता है स्पेयरिंग, ओह डोंट गो देयर, ही विल नेवर स्पेयर यू। और दूसरा होता है अनस्पेयरिंग, चलो यार माफ करते हैं। लिबरल, फ्री हैंडेड, चैरिटेबल। चैरिटी क्या होता है, जहां दान दिया जाता है, चैरिटेबल, CHARITABLE, चैरिटेबल, जहां दान दिया जाए, जो दान देने वाला होता है। बिग हैंडसम, म्यूनिफिसेंट, MUNIFICENT, म्यूनिफिसेंट, MUNIFICENT, म्यूनिफिसेंट। Munificent approach of the government of India. Recently, I can use in the context of RBI. They have given 64,000 crores. For what? For letting more liquidity in the market. So that was also said, the generosity on the part of RBI, and that was also said, munificent approach of RBI. Lavish, dispersal of money, LAVISH, lavish. Benevolent, BENOVOLENT, benevolent. You come to antonyms, it is selfish. Just imagine, how can a generous man be selfish? Selfish लोग कभी generous नहीं हो सकता, कभी generous लोग selfish नहीं हो सकता, दोनों विपरीतार्थ है, दोनों they are poles apart. So the antonyms, उल्टा के generous का क्या हुआ, selfish. Stingy, uncharitable. Uncharitable, एक चैरिटी करने वाला जनरस हो गया, जो अनचैरिटेबल हुआ ही इज माइटर। चैरिटी जो नहीं करता, अनचैरिटेबल। स्टिंजीनेस, इनकंसिडरेट, आप अपना सर पत्थर पे पटक लो, पत्थर हो सकता है पिघल जाए, लेकिन जो सेल्फिश लोग होते हैं, जो नॉन जेनरस लोग होते हैं, दे आर टोटली अनमूव्ड। होते हैं ऐसे लोग। Stinted, ungenerous again. So
Today I gave you two words, and in course of my discussion I have discussed plethora. Again I use the word plethora. I will again discuss this word next day. Plethora and myriad. Plethora. 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 Plethora and myriad. 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 माने बहुतायत, बहुत की संख्या में, बहुत, plenty, प्रचुर मात्रा में. There are plethora of occasions, myriad occasions, opportunities for you, my dear children, to learn new words. Use it day to day and just see the world of difference in your personality. As I gave you one sentence, the difference between ordinary and extraordinary is that little extra. So every day you try to create something little extra and just see the difference. Now, at the last, I'll give you one famous quotation. You must have heard of Thomas Edison. He must have failed more than 10,000 times. वही थॉमस एडिसन जिसने फ्लोरेसेंट बल्ब का आविष्कार किया था. He had said, I haven't failed. मैं फेल नहीं किया हूँ. I have just found 10,000 ways that did not work. हजारों बार, 10,000 से ज़्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किसी में सक्सेस नहीं मिली. बाद में सक्सेस मिली, लास्ट में मिल गया, जिसमें वो फ्लोरेसेंट बल्ब. अब तो आ गया LED, लेकिन प्रिंसिपल वही है. जब उन्होंने फ्लोरेसेंट बल्ब का आविष्कार किया था तो उनकी मिसेज ने उनको चिड़चिड़ाया. शी पास्ड ए सरकास्टिक कमेंट, क्या आप इतना बर्बाद कर दिए. बोलता है, आई हैव नॉट फेल्ड माय डियर डार्लिंग, बट आई हैव फाउंड दैट माय 10,000 वेज डिड नॉट वर्क. My 10,000 experiments did not click into fruition. रिजल्ट नहीं दिया, सफलता नहीं मिली. इसका मतलब नहीं कि मैं फेल कर गया. यदि वो 10,000 फेलियर्स के ऊपर मैं चढ़ के नहीं आता तो ये रिजल्ट आज सफलता की नहीं मिलती. इसलिए माय डियर लविंग चिल्ड्रन, कीप ऑन ट्राइंग एवरी डे. एवरी डे शैल रियली लाइटन फॉर योर ब्राइटर कैरियर फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच. उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी. ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी. उसको नहीं देखा हमने कभी. इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे. है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे. ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन. ऐसी कोई मूरत क्या होगी. ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी. उसको नहीं देखा हमने कभी. जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे. ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे. तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे
सूरज की जरूरत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी। कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी।